नमस्कार डियर व्यूअर्स, स्टूडेंट्स एंड आवर फ्रेंड्स, आप सभी का करियर चर्चा में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। हमारी इस प्यारी सी नई सीरीज को आपका अच्छा प्यार मिल रहा है। एवरी संडे मॉर्निंग 8 AM हम आप तक किसी एक दिग्गज को लेकर आते हैं जो आपको अपने करियर को अच्छे ढंग से शेप अप करने के नए नए तरीके बताते हैं। ये सीरीज हमारी चलती रहेगी और जो लोग लगातार जुड़े हैं, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं सेशंस को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल के साथ जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इन सेशंस को पहुंचाइए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने करियर में कुछ पॉजिटिव करने के जज्बे के साथ आगे बढ़ें। प्यारे दोस्तों, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी है, आज करियर चर्चा में हमारे साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशंस, एमबीए एंट्रेंस, सिविल सर्विसेज और लाइफ कोचिंग से जुड़े इंडियन आर्मी से रिटायर्ड एक बहुत बढ़िया करियर कोच जुड़ चुके हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल गुरमीत सेठी जी। मुझे बहुत खुशी है आपका परिचय देते हुए। Gurmeet Sethi ji is a seasoned counselor, mentor, trainer, and a motivator with more than 24 years of an enviable track record. आप एक लाइफ कोच हैं जो काउंसलिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग करते हैं। आपने सैकड़ों स्टूडेंट्स को टॉप बी स्कूल्स में पहुंचाया है और एप्टीट्यूड टेस्ट और सॉफ्ट स्किल्स में ही हैज बीन कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग स्टूडेंट फॉर मोर देन 2 decades नाउ। आपने बहुत सारे इंडस्ट्री वर्टिकल्स में भी अपनी सर्विस दी है। ही ट्रेन स्टूडेंट्स ऑन सॉफ्ट स्किल्स और एक इंटरव्यू स्पेशलिस्ट भी हैं और वही हमारा आज का फोकस भी है। आज का हमारा सेशन है क्रैकिंग इंटरव्यूज। बहुत मजा आने वाला है आपको। आपने भारतीय सेना को 23 सालों तक अपनी शानदार सेवाएं प्रदान की। He is an ex-NDA officer, a civil engineer from the Corps of Engineers with a very vast and a varied experience. आपने बहुत सारे कॉम्बैट, स्टाफ मैनेजमेंट और टेक्निकल कोर्सेज किए हैं। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि लेफ्टिनेंट कर्नल गुरमीत सेठी आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए आपका स्वागत करते हैं। सेठी जी, आई वेलकम यू टू द करियर चर्चा शो। कैसे हैं सर आप? थैंक यू संदीप, इट्स माय ऑनर एंड प्राउड प्रिविलेज। बड़ी खुशी की बात है आज करियर चर्चा में जुड़ के, बड़ा अच्छा लग रहा है और आप एक बहुत ही अच्छी सेवा प्रदान कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। सो मेरे को बड़ी खुशी हुई आज आपके साथ इस फोरम पे आने के लिए। थैंक यू सेठी जी। तो सेठी जी, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस शो की, जो स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा से रहता है। कोई भी स्टूडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठता है या जॉब के लिए इंटरव्यूज देने जाता है तो उसके मन में एक सवाल सबसे पहले आता है, ये इंटरव्यूज कंडक्ट क्यों करते हो यार? रिटन टेस्ट के बेसिस पे सिलेक्ट कर लो। वैसे इतनी मेहनत हमसे करवाते हो, 1 साल 2 साल 3 साल 10-10 साल तक हम अलग अलग एग्जाम दे रहे हैं। 10 साल तो थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन 4-5 साल। तो why even hold interviews at all? What are the benefits of holding interviews for various exams and jobs? And can we not just do away with interviews? And if we cannot, then why do we have them at all? तो थोड़ा ये हमें आप वार्म अप यहीं से करवाइए सर। संदीप, बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं अक्सर आई डू अ लिटिल बिट ऑफ लेग पुलिंग ऑफ माय स्टूडेंट्स बाय टेलिंग देम कि यार यू गाइस आर ब्रेव हार्ट्स। यू नो, आप 1 साल पूरी मेहनत करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट की पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं और फिर जाके 15 और 20 मिनट की इंटरव्यू में आपका सारे भविष्य का फैसला हो जाता है। I said, how do you guys, dare to take on a challenge like this in 15-20 minutes and either win the battle or lose out everything and again start preparing perhaps for the next year. So कहने का मतलब कि जब स्टूडेंट्स को ये पता चलता है तो वो सच में सोच में पड़ जाते हैं, एक दुविधा में पड़ जाते हैं कि हाँ यार, सच में हमारा फैसला सिर्फ 15 मिनट के एक इंटरव्यू में डिसाइड होने जा रहा है और मेरा पूरा 1 साल का भविष्य इसके ऊपर निर्भर करता है। तो then only he understands the gravity of the situation. जहां तक आपका दूसरा प्रश्न है कि why can we not do away with the interviews, बहुत ही अच्छा सवाल है। और इसमें हमने देखा कि आप देखोगे कि कुछ करियर्स हमारे ऐसे हैं जहां पे हमें बिल्कुल इंटरव्यू लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, बैंक क्लरिकल। You see, we have done away with all interviews for the bank clerical exam. हालांकि 19-20 का शायद एप्टीट्यूड टेस्ट में फर्क होता है, लेकिन क्लरिकल की इंटरव्यू नहीं होती, पीओ की इंटरव्यू होती है। इसी तरह मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यू सी जहां पे हमने देखा कि आपका एटीट्यूडनल चेक होना है आफ्टर द एप्टीट्यूड प्रोसेस, they would like to see the person and they would like to test him.
इसीलिए कहते हैं कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट यू फॉर एटीट्यूड एंड ट्रेन यू फॉर एप्टीट्यूड. आपका Sir, एप्टीट्यूड. just a moment. जी जी. This is a wonderful thing you just said. So I need to dissect that a bit more. हाँ जी. You just said that companies hire for attitude and they train for aptitude. Did I catch it जी right? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल So बिल्कुल. this very catchy and a beautiful thing that you said, which almost can be turned into a slogan, almost. जी. What does it mean? इसका मतलब क्या है? That companies hire for attitude and train for aptitude. ये क्या है? Sandeep ji, you could be the best in your university, you could be a topper. You could have maxed CAT with 100 percentile score. लेकिन the point is, आपका जब एटीट्यूड आता है सामने, तो हमें एक प्रश्न मार्क हमारे चेहरे पे आ जाता है कि क्या स्टूडेंट को रियली लेके हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वैल्यू एडिशन होगी, या क्या एक गंदी मछली तालाब में घुसने की कोशिश कर रही है. It has been seen that organizations have been ruined with just one bad fish entering the water. We will not allow that to happen. And that's why you have this stringent screening process. Right? At times we conduct 2 to 3, 3, 4 interviews for good organizations, for the people to be screened. Right? Please understand that technical prowess has been checked. Your aptitude may have been checked, but yet they are not satisfied and they want to check you attitudinally. So this is a very important process which people don't understand. I like to share another thought with you. You see, we have often seen people say, "Sir, मेरा mock ले लो, mock ले लो, mock ले लो," and without realizing कि मैंने अपने attitudes के ऊपर तो काम किया ही नहीं है, मैंने कोई और खास इस तरह की तैयारी तो करी ही नहीं है, और simply mock दे दे के we are repeating the same very mistakes which we had been committing earlier. This has been my experience with people, right? That they do not want to train themselves, they do not want to really put in effort to improve upon their attitudes, जो कि पक चुके होते हैं. इतने सालों में 20-22 साल आपके जो जीवन के आपने बिताए हैं, उसमें आपके एटीट्यूड इतने पक जाते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं. And we keep on repeating the same mistakes. Attitude होता क्या है? वेरी गुड. सो यानी कि ये एक हमारा नजरिया है, पर्सपेक्टिव है. हम लोग बात करते हैं ग्लास ऑफ फुल, ग्लास ऑफ एम्प्टी की. ऑफन सिचुएशन इज द सेम एवरी टाइम, यू सी. लेकिन आप उसको देखते किस नजरिए से है, तो जिसके लिए आई थिंक दिस इज ए माइंडसेट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू सी थिंग्स फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव. एंड टिल द टाइम हम लोग उसकी ट्रेनिंग नहीं करते, वी कंटिन्यू टू सी थिंग्स इन दैट लाइट. So this is So how you it happens. mean people can be trained for attitude also? Absolutely, Sandeep. In fact, I'm an attitudinal trainer because I realize this problem that people are, in their attitudes is the major obstacle in the interview process. I'll explain how. You see, the type of words that you pick up, the type of ideas that you portray, the type of tonal quality that you portray in your interview, and the type of body language that you reflect is all makes it evident कि आपका पीछे कितना past, कितना rotten है. I'd like to explain this a little more, if you really Okay. allow me to. संदीप जी, 22 घंटे अगर मैं नेगेटिविटी में बिताता हूं, तो मेरे लिए वो 2 घंटे की पॉजिटिविटी भी मेरे को नजर नहीं आती. और जिनके 22 घंटे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बीतते हैं, उनके लिए 2 घंटे की नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है. थोड़ा ये समझाएंगे, ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, लोगों की जिंदगी के तो अपने अपने कंस्ट्रेंट्स हैं. आप किस फैमिली से आते हैं वो तो आप चेंज कर नहीं सकते, स्कूल कॉलेज चेंज कर नहीं सकते, यार दोस्त सोशल सर्कल, अपने जीवन की सच्चाई तो आप चेंज चुटकी बजाते कर नहीं सकते. सो बाय दिस पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी, व्हाट आर द स्पेसिफिक्स दैट यू आर हिंटिंग एट? Yes, very interesting, Sandeep. In fact, you'll find very few trainers who have actually hit this idea. The point is, let's take a simple question like, you see, what are your hobbies and extracurricular activities? It's a very innocent question. लगता है कि यार क्या है, कुछ भी बोल के आ जाएंगे. मैं ऐसा listening to music, you see, or let's say playing cricket with my friends, etc. And we don't take these questions seriously. But do जी. you really understand, or do we really understand this, that an empty mind is a devil's workshop is what they're trying to check? ओके. आप वेले पंक्ति में गुजार रहे हैं. And we हम्म. all know that empty mind is the devil's workshop. And हम्म. yet we are doing nothing about it. हम्म. There's some students who come to us and say, "Sir, मैं इसके साथ एक additional sheet attach करना चाहता हूँ."
और कुछ लोग कहते हैं सर इसमें क्या लिखूं, मैं कहता हूं मेरी लिखेगा क्या, तो मैं लिखा देता हूं मैं अपनी हॉबीज और एक्स्ट्रा करिक्स. So, this is a dilemma which a student faces, but it's often too late in life for a person to realize that as to where he must start working upon it. Very good point. I believe we had been discussing the need for interviews in exams and jobs. और वहां से मैं पकड़ के आपको खींच के एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में ले आया, लेकिन बहुत जी, अच्छा डिस्कशन हुआ. तो हम वापस वहीं चलते हैं. तो आप ये जी, बता रहे थे कि व्हाट इज द नीड फॉर इंटरव्यूज इन एग्जाम्स एंड जॉब्स. तो उसको आप कंप्लीट कर लें. right. So, the way we were saying, you see, the number one reason is that we want to eliminate the bad fishes. That's one. And the second reason is कि we want to check on the perfect fit. अब ये perfect fit भी बड़ी एक अजीब सी दास्तान है. यू सी मेरे में सब कुछ है, मेरा एटीट्यूड भी ठीक है, लेकिन फिर भी जी मेरा इंटरव्यू में नहीं होता. तो जी. वी डू नॉट रियलाइज, एंड माय एक्सपीरियंस हैज बीन दैट पीपल डोंट इवन रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्ली and they ओके simply apply, and this is true for all most of the campuses as well. People ओके simply rush the resumes just because the company is coming without ओके. understanding as to what the company is asking for, what is the job description like, do I really fit into this role or not, and then when they do not make it, they go into a depression and do not come out for 4 days. But if you really see the perfect fit, you will understand that merely preparing for interviews does not mean that you'll crack each and every interview. You ओके have to be very discreet. ओके ओके. Yeah. कई बार ऐसा होता है सर कि कुछ बड़ी कंपनियां, आईटी कंपनियां आती हैं और पूरी जी, बैच को उठा के ले जाती हैं. एंड जी, इंटरव्यूज आर मोर और लेस जस्ट अ फॉर्मेलिटी इन दैट केस. जी, जी, जी. तो ये जो बारीकियों पे हम बात कर रहे हैं, हाँ क्या जी. ये उन परिस्थितियों में भी लागू होती हैं जहां पूरी की पूरी बैच को उठा के ले गए? उसमें संदीप जी ऐसा है, देखिए जहां पे आईटी कंपनीज है, दे रिक्वायर ए बैच स्ट्रेंथ, दे बेंच स्ट्रेंथ, you see, to get the various you see projects for themselves. Their requirement is a little different, and so what they see is they're not really bothered about such finer qualities of a person. They merely pick up people because they want numbers, and they want to only see that yes, okay, you fit into the cultural environment, और अगर आप वो कल्चरल एनवायरनमेंट में फिट हो रहे हैं उनकी कंपनी के, तो वो आपको उठा के ले जाते हैं. दैट्स देयर रिक्वायरमेंट. So we need to understand each company as to what is the requirement and how do we fit in over there. अनदर इंटरेस्टिंग थिंग आई सॉ इन योर डिस्क्रिप्शन सर, जो आपने हमें दिया था, कि यू ऑल्सो डू लाइफ कोचिंग. हाँ जी. ये क्या चीज होती है लाइफ कोचिंग? ये मैं समझ नहीं पाया, ये बताइए सर थोड़ा. Sandeep ji, it's just been, I've realized one thing. You see, for a person to give his 100% best, you see, in his professional life, you are also affected by what sort of environment you have back at home. If I'm not happy with my, let's take with my environment back at home, my family, my other issues, my friends circles, my other attributes, how do you expect me to put in and give my 100% best in my professional career? I'm not able to do so. और हम लोग खोजते रहते हैं कि इसको काउंसलिंग कर दे, मेंटरिंग कर दे, और इसको बोले कि कम ऑन बेटा, इंप्रूव योर वर्क प्रोफाइल एक्सेट्रा, जबकि उसके प्रॉब्लम कहीं और लाइक करती है. तो इसलिए if the person has to balance his professional and personal life, you see, it's a very important that we have a peep into it and try. I'll tell you something very interesting. Whenever I used to recruit, even at my institute, people, so although I had a staff of just about 19 to 20 people, but I would always make sure that I have a look at his personal life. I would even like to meet his family and wife and children, as to, you see, what sort of a grooming is he giving it to them, because if he cannot look after his own wife and children, how is he going to look after my students? So it's so very important. They all, I think, ये सारे चीजें जो है ओवरलैपिंग है. ये आप आइसोलेट नहीं कर सकते, इनको आप वाटर ओके टाइट कंपार्टमेंट्स में नहीं डाल सकते. ओके ओके. वेरी इंटरेस्टिंग. अब सर आप हमें थोड़ा ये बताइए, इन जनरल इफ आई एम अ स्टूडेंट and I am preparing for various competitive exams which have some interview component in it, and I have no knowledge about interviews. मैंने आज तक कोई इंटरव्यू लिया नहीं है, मैं बैठा नहीं हूं किसी इंटरव्यू में, और मुझे पता ही नहीं होता क्या, बस उड़ती उड़ती बातें सुनी हैं और लोगों के कुछ इंटरव्यूज यूट्यूब पे देख लिए हैं वगैरह. तो आप मुझे जीरो से गाइड करें, सुपर टिप्स फॉर सक्सेस इन इंटरव्यूज.
मैं जीरो पे खड़ा हूं और मैं तो सुनने को तैयार हूं, अब आप मुझे गाइड करें. इफ दिस इज द Right. स्टूडेंट सिचुएशन, प्लीज व्हाट वुड यू से? Right. Sandeep ji, this is often the case with many a student, and many of them have come and tell us that, sir, I've never been through an interview. सर मेरे को पता ही नहीं इंटरव्यू में होता क्या और मैं इसलिए नर्वस हूँ. और सर पहली बार जब मैं जाता हूँ तो सर हर चीज के लिए घबराहट सी महसूस होती है. तो I would rather put it very simply that this is a three-step process of preparing for the interview. The first step is to know oneself, that is, know yourself. You are the product over here. ओके. And if you do not introspect and know yourself, what जी. are you going to say in an interview? जी. That's the first part of it. Now, what is to be said, I'll come to it a little later if the time permits. The ओके. second aspect of it is that we need to believe in ourselves. Now, हम्म. there's a very big difference between knowing yourself and believing in yourself. नोइंग ठीक है, मेरे को पता है यार मैं ये कर सकता हूं, मैं इसमें अच्छा हूं, ये मेरी स्ट्रेंथ्स है, ये मेरा बैकग्राउंड है, एटसेट्रा, ये मेरी हॉबीज है, एक्स्ट्रा करिक्स है. लेकिन आई हैव सीन पीपल डू नॉट बिलीव इन देमसेल्व्स एंड हम्म. उनके चेहरे पे एक प्रश्न चिन्ह नजर आता है इंटरव्यू के दौरान. एंड वी कैन मेक आउट कि कह रहा है, ही इज टेलिंग मी ऑल दिस फॉर द हेक ऑफ इट, राइट, बट ही डज नॉट रियली बिलीव इन इट. ओके. बिलीविंग और सिंपली डिस्क्राइबिंग में बहुत बड़ा फर्क है. And ओके. the third is the even most important of them all, and that is you need to sell your candidature. Now, this is ओके. what we do not understand, right? We think describing my candidature and selling my candidature is one and the same thing. No, it's not. Let's take a product. Supposing this is a pen, in my pocket, and this is a product. First of all, I need to know the product. The second thing is, if I don't believe in this product, I'm not able to present the product before you. I can't even speak confidently about the product. And the third thing is, I need to sell this to you. If I am unable to sell and only describe the features of the product, I'm sure this pen is not going to be sold. जी. तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले खुद को जानो, उसके बाद अपने आप में यकीन बनाओ, और उसके बाद अपने बेस्ट एस्पेक्ट्स को इंटरव्यूअर के सामने सेल करने का प्रयास करो. जी. अगर कोई कैंडिडेट इन तीनों में से कोई दो काम कर पाता है और तीसरा काम नहीं कर पाता, तो क्या उसे ग्रूम किया जा सकता है? बिल्कुल. संदीप, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द ट्रेनर मस्ट डू. और मैं ये समझता हूं कि यहीं पे हमारी तरह के लोग काम आते हैं. It is a very tedious and a time consuming process which we do not understand. We simply think कि इसको एक जनरल ओरिएंटेशन टॉक देंगे और इसको एक मॉक दे देंगे और ये तैयार हो जाएगा. दिस इज माई आई हैव कम अक्रॉस इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री में जहां पे इस तरह से ट्रेनिंग हो रही है, जी. जबकि वो स्टूडेंट वो नहीं निकलेगा. कई बार निकल जाते हैं, मैं नहीं कहता नहीं निकलेंगे, वो जी. निकल सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द मैनर इन विच द पर्सन नीड्स टू बी ट्रेन्ड. It ओके. requires a lots of effort, right? You got to work on every student as if it's an individual product. और उसके ऊपर बिलीफ का जहां तक सवाल उठता है, मैं तो साफ स्टूडेंट को कहता हूं, इफ यू डू नॉट लाइक योर फेस, डोंट एक्सपेक्ट मी टू लाइक योर फेस. इफ यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट एक्सपेक्ट मी टू बिलीव इन यू, राइट? सो बेटर स्टार्ट लविंग योर सेल्फ. और वो एक जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसको काफी टाइम लगता है. उसको पहले समझ नहीं आती अपने बारे में. I think, sir, you are reminding all our viewers of the beautiful Matrix trilogy movie, जिसमें मॉर्फियस ने नियो को कहा था that you have to let it all go, fear, doubt, disbelief, free your mind. तो कुछ आपकी बातें वैसी ही सुनाई दे रही हैं, तो बड़ी अच्छी लग रही हैं. तो ये 3 सुपर टिप्स थी, और हमारे सभी व्यूअर्स इन्हें सुने, समझें, और अपनी इंटरव्यू की तैयारी करते समय इनको फॉलो करें. सेठी जी की बात में बहुत दम है. तो सेठी जी, एक बात बताइए, हर बच्चा सफल तो होगा नहीं. जब आपने पूरी एग्जाम की तैयारी की, इंटरव्यू की तैयारी की, और फिर आप फेल हो गए, हैंडलिंग दैट डिजेक्शन इज नॉट इजी इवन फॉर एक्सपीरियंस्ड पीपल. व्हाट वुड यू सजेस्ट be the approach to handling dejection? Very good. This often happens. You're very right. We cannot crack each and every interview, and many a times it's not possible. लेकिन संदीप जी, आई थिंक इसका जवाब मैंने पहले जैसे दिया था कि there is a element of perfect fit. So the student must get back to his desk again and start introspecting as to where has he gone wrong.
यू सी व्हाट वेंट रॉन्ग और मेरा परफेक्ट फिट कहां पे मिसिंग था, मैं किन एरियाज को और इंप्रूव कर सकता हूं, और कहां पे मेरा जो ये परफेक्ट फिट है वो काम नहीं किया। और अगर कैंडिडेट उसको मेहनत करे तो आई एम श्योर ही विल बी एबल टू क्रैक द कोड। तो डिजेक्शन को हैंडल करना, जैसा सेठी जी ने अभी कहा, ये आपकी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का इंटीग्रल हिस्सा होना चाहिए। आई मीन, यू हैव टू प्रिपेयर for the toughest of interviews with the best of optimism, and you have to be ready for the worst of outcomes as well. And life rolls on, जिंदगी रुकती नहीं है। Am I right, sir? क्या मैं सही समझा Yes, हूँ? yes. I like to share a small example over here. You see, Please. a company came which was looking for candidates who were local candidates. An Okay. outside candidate was very good. He appeared for the interview, but unfortunately, he was not a local candidate. So he Okay. could not make it. Now, there's no fault of the candidate as such. But then he must find out as to, you see, what could be the reasons for my rejection and why have I not made it. So I don't Okay. think there's any cause for dejection in case he's able to analyze the cause for his rejection. Hmm. Normally, 7 or 8 out of 10 interviews would begin with a very simple and an innocent question. Tell us something about yourself. True. ऐसा होता है 70 से 80% टाइम इंटरव्यूअर बड़ा मासूम सा सवाल पूछता है कि भाई प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाँ जी, हाँ जी। अब आप थोड़ा हमें गाइड करें, what are the various approaches to tackling this very seemingly simple question, and is this question really that simple? Uh, Sandeep ji, I have always followed this that this is the most important question of an interview. Unfortunately, number of times people come and tell me कि sir मेरे से तो ये पूछा ही नहीं गया, because my interview started over the different note altogether. I'll tackle both these. You see, because this is very important. और मैं इस चीज को मानता हूं कि अगर मेरे को इंट्रोडक्शन का टाइम मिला, इसको मैं 90 सेकेंड्स की पिच मानता हूं, सेल्स पिच अपनी, राइट। और अगर उस 90 सेकेंड्स की सेल्स पिच में आई एम एबल टू सेल माय कैंडिडेचर टू यू, मैं समझता हूं हाथी निकल गया। और एक Okay. बार ये हाथी निकल गया ना, तो मेरे चांसेस ऑफ सक्सेस आर वेरी वेरी हाई, लेट मी टेल यू। क्योंकि आज आके इंटरव्यू का क्वेश्चन एक ही है। आप जो मर्जी Mm-hmm. मेरे से पूछ लो, जीके पूछ लो, करंट अफेयर्स पूछ लो, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछ लो, आप मेरे को वर्क एक्स के बारे पूछ लो, क्वेश्चन एक ही है। व्हाई शुड वी टेक दिस कैंडिडेट फॉर दिस वन सीट which is there in front of you, right? जी। And if you can convince me with respect to that one seat, I'm हम्म। going to be there if I have हम्म। prepared myself for it. So हम्म। this is what the candidate must prepare himself with. हम्म। Now the question is, what do I tell the person? जी। Unfortunately, many a candidates loses the narrative because वो क्या करता है, इधर उधर की बातें बताना शुरू कर देता है which are irrelevant, and the interviewer thinks, yeah, you're wasting my time, so let's come to the point. So he cuts you short and he starts asking questions by himself. You lost the initiative now. So in case I want to go on, I have to ensure that I talk relevant things only. Now, what is relevant and what is irrelevant यस। again यस। requires a lot of work. ओके। हाँ तो थोड़ा बताइए ना सर, क्या जी बोलना चाहिए इसमें हमें? जी। तो मैं इसमें कुछ चीजें, कुछ एलिमेंट्स उस स्टूडेंट को बोलूंगा टू इंट्रोस्पेक्ट एंड टू इंक्लूड, राइट। नाउ दिस रिक्वायर्स थ्री थिंग्स इन द इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स सी, it requires deep understanding of your own profile, number one, and the perfect fit. Number two, it also has an element of psychology and English built into it. May not be English, maybe even in Hindi or whatever language you are talking about, but it has to be a professionally good language, which wherein you are selling your pitch, where you're pitching yourself. And the third is that it has to be a sales pitch. So that is where we need to understand that this is a very well structured answer which has to be given, जो कि रट्टा हुआ होना चाहिए लेकिन रट्टा हुआ लगना नहीं चाहिए। तो इसमें बड़ी डायकोटमी है, राइट। सो हम तो ये भी सर, सिखाते हैं स्टूडेंट रटा को, हुआ होना बेटे। चाहिए पर रटा हुआ दिखना नहीं चाहिए। जी तो जी इसमें तो बिल्कुल। थोड़ा सा नकलीपन नहीं आ जाएगा सर ये करने में? नहीं, मैं समझता हूं, लेकिन
करे तो बेचारा क्या करे, 90 जी सेकेंड्स आपने उसको दिए हैं, और जी अगर मेरा ये इनिशिएटिव मेरे हाथ से निकल गया तो जी फिर आई एम एट द रिसीविंग एंड मोस्ट ऑफ द टाइम। जी सो जी उस बेचारे को, और अगर वो रट के भी आया तो क्या बुरा किया, मेरे को बताइए, अगर मैं तैयार होके आया हूं, राइट, तो मैंने क्या बुरा किया, जी। और अगर अच्छा मैं सर, एक बिना बात तैयार बताइए, होके आया। ये जी। तो बहुत गंभीर बातें हो गई। अगर मुझे कोई चाय ऑफर करे इंटरव्यू में बिस्किट के साथ, तो मुझे लेना चाहिए कि मना कर देना चाहिए? यस संदीप, अगर मैं वहां पे सपोजिंग चाय पीने गया हूँ या इंटरव्यू देने गया, पहली बात, आई हैव टू बी वेरी क्लियर विद माय प्रायोरिटीज, ओके, बट येट यू सी माय एवरी सेकंड विद द इंटरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। शुड आई स्पेंड टाइम ड्रिंकिंग टी, sipping tea, or should I not let these infructuous things come in between me and my interviewer? That is the moot question, you see. It's not the question of taking a or picking a cup of tea and keeping it there or having a sip or two, but it is more of, social and etiquettes and manners which you have to read. Interviewers having tea and you have been offered tea, take it. Don't make it a damn issue between you and the interviewer. And जी। यही कि नो सर, नो सर, वो बोलता है ले लो, नो सर, नो सर, और आप ड्रामा कर रहे जा रहे हैं। रख लीजिए ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके बाद डोंट स्टार्ट एंजॉयिंग बिकॉज हिज टाइम इज वेरी प्रेशियस. So don't let the tea come in between you and the interviewer. जी जी जी। जी. तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो हो गया, और कुछ कुछ हमको समझ में भी आ रहा है, हालांकि ये चीजें बहुत डिफिकल्ट होती हैं। सभी हमारे व्यूअर्स और स्टूडेंट्स एक बात तो समझ रहे हैं, it takes a lot of time and effort to really understand these things because it may not come naturally to many of us. तो बहुत अच्छा है, आप बता रहे हैं धीरे धीरे खिड़कियां खुल रही हैं, और एक दो बार देखेंगे, फिर से सुनेंगे तो समझ में आएगा। ये भी हम समझ रहे हैं कि फॉर एवरी कैंडिडेट इट हैज टू बी एन इंडिविजुअल कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन, और ऐसा कोई वन साइज फिट्स ऑल तो हो ही नहीं सकता है। तो आई अप्रिशिएट उस आंसर की जो इसको मेच्योरिटी थी पर्सनल वो कहां से इंटरव्यू आ रही क्यों थी। कहते हैं संदीप जी? इसको पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल, इट इज पर्सनल टू यू, इट इज नॉट ए ग्रुप, कि सारे ग्रुप को एक ही आंसर टेलर मेड लिखा दिया गया और बोला कि जाके वहां बोल आना. इट इज हम्म हम्म पर्सनलाइज्ड, इज वेरी वेरी हम्म पर्सनलाइज्ड. हम्म 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 व्हाट इज एन आइडियल इंटरव्यू पैनल साइज? 2, 3, 4, 5 क्या होना चाहिए और क्या होता है नॉर्मली? It is very interesting. You see, at times I remember एक सिम्बॉयसिस के कॉलेज की इंटरव्यू चल रही थी, तो उन्होंने एक रूम में एक बंदा बैठा था और एक में दो का पैनल बैठा था. तो एक स्टूडेंट की धारणा थी कि इट इज बेटर टू गो टू ए पर्सन हु इज वन मैन, जी तो इट यू गेट मोर रिएक्शन टाइम परहैप्स, व्हेन ही आस्क्स यू अ क्वेश्चन, रादर देन गोइंग टू ए टू वाला पैनल. तो जी कहता मेरा जब नंबर लगा तो दोनों रूम इकट्ठे खाली हुए, तो मैं क्रिस क्रॉस करके स्मार्ट एक्ट मार के एक वाले के पास चला गया. कहता अंदर जाके मेरे पांव थिरक गए, क्योंकि अंदर जो बंदा बैठा था मेरे को कुछ जाना पहचाना और देखा हुआ लग रहा था. ओके। तो कहता जब मेरे को ध्यान आया तो ही वॉज टीएन सेशन, इफ यू रिकॉल. Oh my God, that was a bad choice. I would say very bad choice. तो कहता है कि टीएन सेशन, द पर्सन, यू सी, ही वाज द इलेक्शन कमिश्नर फॉर इंडिया. उन दिनों एक ही हुआ करता था, और वो क्या करता था, उसका उसका कथन था कि आई हैव पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट. Absolutely, दिस इज हिज absolutely. स्टेटमेंट. सेशन साहब ने तो इलेक्शन कमिशन को सुधार दिया था, जी जी. और तो भारत में उन्होंने कहता पहली मैंने बार काम इलेक्शन भर गया. कमीशन की ताकत बताई थी। जी जी. बहुत बढ़िया, बड़ा फनी और ह्यूमरस ये इंसिडेंट्स आपने बताया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। जी. ये बताइए सर, कुछ स्पेशल टिप्स अगर आप हमें एमबीए एंट्रेंस इंटरव्यूज के लिए अगर दें, और उसी प्रकार कुछ स्पेशल टिप्स आप हमें सिविल सर्विसेज के पर्सनालिटी असेसमेंट स्टेज के लिए अगर देना चाहें, तो ये दोनों हम एक एक करके ले लेते हैं। What should students do and focus on as far as MBA entrance interviews of IIMs are concerned and other MBA schools and the civil services aspirants? तो दोनों के ही लिए क्या क्या तैयारियां कॉमन हो सकती हैं, क्या क्या अलग होती हैं, अप्रोच क्या होती है, प्लीज सर। Sandeep ji, whereas MBA is concerned and civil services, there are some things which are very common amongst the two. और वो ये है कि दोनों are very elite and leadership roles, you see, which a person is supposed to play. And as you know, leadership is a very loaded word. And in order to check leadership qualities of a person, जी I would rather like to quote
couple of statements. One जी is by Peter Urs Bender. And Peter Urs Bender ने एक किताब लिखी है लीडरशिप फ्रॉम विदिन. और लीडरशिप फ्रॉम विदिन में उनका एक कोट है जिसमें वो कहते हैं दैट लीडर्स आर ऑर्डिनरी पीपल लाइक यू एंड मी जी who have a vision and they have the ability to communicate the vision. ओके A very profound statement. Now you हम्म see, I MBA student normally comes to me and says, "Sir, मेरे से पूछा गया कि 2 साल बाद तुम कहाँ होगे, 5 साल बाद तुम क्या करोगे, 10 years का आंसर कैसे दूं?" तो ये क्या कोई कोई स्टैंडर्ड आंसर्स हैं क्या? Yeah, हम्म do I have to get the vision out from the candidate? So this is the question, you know. जी Some people are not able to see 2 days from now onwards. किसी को हम्म ये भी नहीं पता कि आज शाम को मैं क्या करने वाला हूं, और किसी को हम पूछ रहे हैं कि तू 2 साल बाद क्या करेगा और 5 साल बाद मैं क्या थोड़ा करेगा. यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर. 1990s and 2000s was a very different era. जी In the 2020s, जी the rate of change in society and in corporates and in governments has accelerated so much. And especially post pandemic में तो अब ऐसा हो गया है कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते आगे का पता नहीं क्या होने वाला है. हाँ जी अगली वेव कब आएगी पता नहीं, अगला लॉकडाउन कब आएगा पता नहीं, भगवान हाँ करे जी कभी नहीं हाँ आए. जी लेकिन हाँ जी ग्लोबलाइजेशन रिवर्स में जा रहा है, रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, एंड थिंग्स हैव बिकम एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल. जी. तो मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है, कमिंग बैक टू दैट पॉइंट ऑफ योर्स कि 5 years 10 years 20 years डाउन द लाइन, आर सच क्वेश्चंस इवन रेलेवेंट टुडे? Is the it, they may not be relevant in this scenario, and I'm not wanting the student to come out with 2 years, 5 years, and 10 years specific answers, because as we go into the future, the things become more and more vague. So we are not looking at that. I'm not trying to say that they would, but you see, we look at the candidates' expression power to take me a bit beyond is today, in Yes, order very to good. actually see why is he particularly coming into for this sort of a role or Hmm, a hmm, hmm, profession, hmm. and what is Hmm, the hmm, purpose hmm. behind it. Hmm, Because hmm, is hmm. it that he's going job hopping, and people must understand the difference between jobs and careers, and that therefore this is not a job that you're looking at, and perhaps trying to build up something for yourself. Now, what is it that you're trying to build up if you do not even know? It's a very good statement from Alice in Wonderland that if you do not know Hmm. where road to take, then go take any road. So it's as bad Absolutely. as that. Hmm, hmm, तो वो तो चाहिए, hmm, इतनी सी विजन तो चाहिए ना हमें कि उस कैंडिडेट में hmm, कि वो क्या है. hmm, That is hmm, one. hmm. The second very interesting thing which I'm going to reveal to these students today is लीडरशिप को इंटरव्यू में चेक करने का एक बड़ा आसान तरीका है. लीडरशिप बड़ा लोडेड वर्ड है, हम इतनी सारी चीजें एक साथ चेक नहीं कर पाएंगे शायद, राइट. उसकी प्रायोरिटाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, जो मर्जी के. बट टू थिंग्स स्टैंड आउट. One, what Peter Roos Bender also said, and that is communication skills. And the first thing I would talk about is analytical skills. Two Mm-hmm. things: analysis and communication. And Okay. therefore, now the question is with your civil services aspirants also. They are Mm-hmm. often asked a question which, in case they are not able to answer, the panel says, never mind, and he says, let's go to something else. Hmm. So that means it is not a test of your gyan. It is not a test of your knowledge, right? It is a test of your analysis and how deeply and widely can you analyze a subject for him. Analytical skills are not common amongst people. You will Okay. find that people who have leadership qualities are very good with the analysis. And this Okay. is what we check. कि क्या ये एनालाइज कर पाता है एक सिचुएशन को कि नहीं, उसमें तो दोनों सर, प्रोज क्या बातें. ऐसा जरूरी है कि हर कैंडिडेट में एनालिटिकल स्किल्स होना ही चाहिए? क्या ऐसे एमबीएज और ऐसे सिविल सर्वेंट्स नहीं हो सकते कि जिनमें कुछ दूसरी स्किल्स बहुत अच्छी हों और एनालिटिकल स्किल्स खराब हों? मतलब क्या वो एक डेफिनेटली कॉज फॉर रिजेक्शन ही होता है? Uh, Sandeep, I would rather say that you see analytical skills हर बंदे में होते हैं, लेकिन कितनी कम या ज्यादा होते हैं वो वेरी कर सकते हैं. एनालिसिस भी कई तरह का होता है. यू सी देयर इज एनालिसिस ऑफ सिचुएशंस, एनालिसिस ऑफ पीपल, एंड एनालिसिस ऑफ नंबर्स. तो लोग नॉर्मली एनालिटिकल स्किल्स को मैथमेटिकल स्किल्स के साथ जोड़ देते हैं. नॉट नेसेसरली. So even for an MBA, you know, I am able to make out, supposing a person is very good when it comes to analysis of reading human beings, minds, people, etc., makes for a very good HR manager, perhaps.
So look at the role in the MBA interview also with respect to analytical skills and also with respect to the civil services aspirants. ओके, ओके, आई थिंक कुछ कुछ हम समझ रहे हैं उस बात को। इंटरव्यूज के साथ ओरिएंटेशन और लर्निंग में ये बहुत अच्छी चीज होती है कि कितना भी ओरिएंटेशन कर दिया जाए, हमेशा कुछ नया सीखने को रहता ही है। 100% जी कभी भी आदमी सीखता नहीं है, सीखते जाना पड़ता है। जी तो बहुत जी, अच्छा लगा बिल्कुल सर, बहुत अच्छे बिल्कुल। आपने पॉइंट दिए। तो कुछ फनी मोमेंट्स भी रहते होंगे सर इंटरव्यूज में, कुछ ऐसी हंसी मजाक की बातें कि जो आदमी, आई मीन यू वुड लिटरली ROFL कि ऐसा क्या हो गया, इसने क्या बोल दिया। कुछ ऐसे मोमेंट्स भी बताएं सर कि विच यू हैव चेरिश्ड एज मेमोरीज की यार कमाल हो गया था उस दिन तो। संदीप जी, दिस इंसिडेंट इज ऑफ योर ऑफिस। जी 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 जी, बताइए बताइए बताइए। आई होप इट इज नॉट विथ मी, तब तक सब No, ठीक है, no, बताइए no, no, it's बताइए। not with you. It's not with you. You see, I was on a mock panel in जी one of the times when I was posted at Indore and I was visiting your office. जी And I was on one of the panels with another gentleman who was perhaps at that time about 12, 15 years senior to me even then. जी So he was sitting next to me, and a young lady walked in, girl, and she had a लंबी सी बिंदी लगाई हुई थी उसने। जी जी तो जैसे ही वो अंदर घुसी, तो दिस जेंटलमैन हाफ गॉट अप फ्रॉम हिज सीट एंड सेज, pointing his fingers towards her forehead and said, ये तुमने ये लंबा क्यों लगाया है? जी 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 And the जी girl was horrified. Even I was shocked. मैंने कहा मर गई। मैं कहा ये बेचारी क्या जवाब देगी, etc. You know, and to my utter relief, the girl answered that question beautifully. जी She said, Sir, I'm a very ambitious person. And you see, I like, things which are going skywards, vertically, right? And therefore, I like putting my bindi in this manner. मैंने कहा, oh my God, excellent. Look at the presence of mind of this person. यस यस You यस see, यस यस। etc. So कभी कभी क्या होता है, हम लोग पर्सनली ले लेते हैं इन चीजों को, जबकि जी हमें पर्सनली लेना नहीं चाहिए. And we should have that presence of mind to answer that question. You see, and I think you made your day if you have been able to do a thing like that. So, एब्सोल्युटली, yeah. बहुत ऐसे बढ़िया, दिस बहुत इज मोमेंट्स है, बहुत मोमेंट्स है। इनफैक्ट मैं आपको क्या बताऊं, मेरे जी को तो अपना बचपन याद आ गया। मैं जब 16 साल का था और मैं पहली इंटरव्यू के लिए गया था और मैं फेल होके आ गया। आई जी वेंट फ्रॉम कैलकाटा टू बॉम्बे फॉर डफरिन इंटरव्यू। तो ओके, पूरा 10वीं पास वाले को डफरिन में रिटन टेस्ट करके मैं वहां गया अकेला। दैट्स माय फर्स्ट टाइम। आई वाज 16 इयर्स ऑफ एज। आई वेंट वाओ, टू बॉम्बे फॉर डफरिन इंटरव्यू। सारा दिन, शाम से, सुबह से लेके शाम तक वहां पे भी लायंस जी गेट बॉम्बे में अंदर हो गया। जी ना जी खाने को कुछ, ना पीने को कुछ, ना पानी, ना कुछ। ओ राइट। और मेरी चांस आया 7 बजे शाम को। जी मेरे मुंह में गुड इवनिंग सर प्रैक्टिस कर करके पता नहीं क्या, कि भैया अंदर जाते ही विश करना है। अंदर घुसा तो 15 लोगों का पैनल था। और 15 लोग। गुड इवनिंग सर तो मुंह में ही रह गया। उतने में किसी ने जोर से बोला, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अरे वाह, और आई वाज स्टन्ड इनटू जी नॉट नोइंग कि ये क्या, व्हाट हैज हिट मी, और मेरे जी को आगे क्या जवाब देना है। आई जी नेवर रियलाइज दैट माय इंटरव्यू कुड स्टार्ट राइट एट द स्टार्टिंग गेट इटसेल्फ, बिफोर आई इवन विश्ड, बिफोर आई इवन गॉट टू द चेयर, एंड बिफोर आई इवन सैट डाउन। कैन यू बीट इट? आई वाज बहुत बढ़िया, हॉरिफाइड। मेरे तो होश उड़े हुए थे। मेरे को समझना है कि क्या बोलना है, एटसेट्रा। And next question they asked me was, do you have anyone in Dufferin? By that time, my attitudes had blown out. जी। And my answer was, I've not come all the way from Calcutta to Bombay to answer this question. A That boy was, of 16. Now oh that's my God. confidence. That's confidence. A boy of God, 16. I knew I'm not going to make it. Oh my God. Amazing, sir. Amazing, amazing, amazing. तो सर एक And बात बताइए, हाँ जी, हाँ जी, the job market is in a lot of stress. जी Unemployment rates are at historic highs. और कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल हाइज, और कहीं ना कहीं बच्चे कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, पर या तो वैकेंसीज गवर्नमेंट की, प्राइवेट सेक्टर की लिमिटेड निकल रही हैं या निकल ही नहीं रही हैं। क्या इंटरव्यू लेने के सिस्टम में, क्योंकि अब ये बायर्स मार्केट बन गया है,
कुछ चेंज आया है पिछले 5 सालों में, 7 सालों में, या सब कुछ वैसा ही चल रहा है? Sandeep ji, very interesting question, and a lot of changes have been observed in this market, especially during the जी, pandemic. If you would have noticed जी, that group discussions were done away with, most of the colleges did away with it and जी, introduced VAT in a big way. There's another development which you must have noticed, and that is the introduction of artificial intelligence, जी। and the bots have come in. ओह, So, आई एम नॉट when, अवेयर ऑफ दिस स्पेसिफिक थिंग। इस पे आप थोड़ा विस्तार में बताइए। so what has happened is that the candidate is asked to submit a written form or fill up a written form. Based on the written form, the AI picks up certain key attributes of the candidate, certain words, etc., and the questions are asked by the bot, and they are then evaluated before the panelists even see the candidate. So this is yet another form of interviewing which has come in a big way in terms of elimination process. So it may not be possible for the panel to take interview for everybody and anybody. So what they've introduced is this process prior to it, and then perhaps take a call. Even if everyone is being called for the interview, I think the minds have already been made as to who has to be focused upon and who is not to be considered. ये तो बिल्कुल ही नई बात बताई सर आपने आज। And और ये कॉर्पोरेट्स में हो रहा है कि और भी कहीं हो रहा है? everywhere, even in the B school this time, I think SIBM did it for the first time, and this was a very interesting development which happened. आई थिंक अनदर 8 or 10 years and even the interviewers would be robots. Yes, true, 2030 true, तक पता चला आप इंटरव्यू देके बाहर निकले, फिर मालूम चला 4 रोबोट्स थे सामने तो। very true, very true, very जी, true, very true. And जी। uh, when I mean we have already spoken about dejection and rejection and handling all of that. Have you come across senior people in their 30s and 40s and maybe in their 50s who are not able to tackle these things well in their life, partly from an interview and partly from a life coach perspective? क्या ऐसा होता है कि लोग सफल होने के बाद भी जीवन में ये जो बेसिक स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स होते हैं इनको बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं, और सक्सेसफुल तो हैं लेकिन इनको हैंडल सही ढंग से नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसे केसेस आपने देखे हैं? Bilkul, Sandeep ji, what happens is that we all go through a midlife crisis. जी, So that is the second stage, I would say, when I come across people who जी, come and tell me that they've had a successful first run, but now जी, in the second run, they are simply not too happy with what they've been doing and they want a change. जी, I would rather suggest, I'd like to make a very profound statement over here. जी। Either make your hobby your career or make your career your hobby. हम्म, You see, मैंने यही किया जब हम्म, मैंने सेकंड करियर अपनाया. This used to be my passion: training people, talking to people, guiding people, जी, etc. And I decided, I said, okay, so let's convert my hobby into my profession. हम्म, And हम्म, today, if you see the passion and if you see कि एक जुनून है अभी भी इस उम्र तक काम करने का, तो that is because of this. That because I realized that yes, जी, if I जी, take up something which is very close to be my passion, I think then I don't have to retire. And still, हम्म, my coachmates हम्म, and colleagues are really surprised. कि how come you still not retired and you still continuing? And you're हम्म, still so busy, etc. So the point what I'm trying to make is it's a definitive way of understanding yourself. You also need to look at your other finances is not the only motive and not जी, the only reason for a person to work at this stage. Maslow's hierarchy of needs is very, very clear when it comes to all this. So we need to understand as to what we are looking at. So this is where the career coach must go into it हम्म, and see हम्म। as to where the person lies. आई मीन आई बिलीव ये तो काफी गहरी बात आपने बोल दी। हॉबीज और अपनी लाइकिंग्स को अगर अपना करियर आप बना पाएंगे, जी, नेचुरली साथ में मैचिंग स्किल्स भी होने चाहिए, नहीं तो सिर्फ पैशन को परस्यू करें और स्किल्स ही नहीं हो तो फेलियर ही हाथ लगनी है। बिल्कुल, बट बिल्कुल. बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला, बहुत से लोग मोटिवेट होंगे इससे। Sandeep ji, we have two जी, very profound examples in front of us. One is Chetan Bhagat. If you really see, he is from a top-notch IIT and an IIM Ahmedabad guy. And what is he doing?
Same goes for Writing Harsha Bhogale. beautiful articles in Times of India, Yeah, enlightening India. yes, yes. And I'm sure he's enjoying himself and वो laughing his आईआईटी में मेरे जूनियर ही थे सर. जी, जी. मैं अरावली हॉस्टल में था, वो कुमाऊं हॉस्टल में थे, तो हाँ उस जी, समय से जानते हैं उनको. हाँ बहुत जी। सफल हुए और भगवान और उनको और मैं सफलता दे. एक और चीज कहना चाहूंगा आपके फोरम और प्लेटफॉर्म से, संदीप जी. द मेनी पीपल यू सी हु आर पुशिंग अगेंस्ट द रॉन्ग साइड ऑफ द वॉल और द रॉन्ग एंड ऑफ द वॉल. द पॉइंट इज मेनी इंजीनियर्स कम एंड टेल मी, सर आपसे एक बात करनी है. मैं बोलता हूँ जी. क्या करना. कहता नहीं सर आपके कान में ही बताना है. मैं कहा बोल, मेरे को पता है तू क्या बताने वाला है. मैं कहता है सर आस्क मी एनीथिंग बट माई इंजीनियरिंग. मैंने कहा कोई नई चीज बता यार. राइट, ये तो मेरे को पहले ही पता है. So the अच्छा. point is, you see, that many of us, you see, who do not have to pursue what we have been doing, and we should, therefore, introspection plays a major part. And I think a life coach plays a major part over here in terms of जी. acting as a sounding wall to you in order to tell you as to then what next and what best can be done. अब एक सवाल आता है सर, जो सभी स्टूडेंट्स को बड़ा तंग करता है. जी. हाउ मच ऑफ करंट अफेयर्स should I be prepared with for a job interview or an MBA interview or a bank PO interview or a civil services interview? Naturally, उनका अपना अपना सिलेबस के हिसाब से भी ये क्वेश्चन की इंटेंसिटी वेरी करती है. बट अगर मैं इसको जनरलाइज कर सकूं, तो क्या बहुत सारा करंट अफेयर्स पूछते हैं, तो मैं कितनी तैयारी करके जाऊंगा, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है. Sandeep ji, both when it comes to your syllabus as well as when it comes to GK and current affairs, I think they are in the same boat, right? Endless. And the more you start dwelling in it, indulging in them, the more you realize how little you know, and you start losing your confidence. So if you want to really build your confidence, I think the way is that current affairs is something which you don't start doing just because you got to sit for an interview. It has to be a part of you. You got to be regularly into it. You got to be alive to your surroundings. You got to know what's happening around us, etc. Because if you're not doing it, I think you are a frog in the well. So please take it from that angle and not from the point of view of only appearing and cracking your interviews. Another aspect which I'd like to say is that GK is a little different from current affairs. It's not the same. Like, for example, supposing I ask you a question, who's the vice president of Brazil? How does it matter? मेरे को भी नहीं पता. Right. So the question is it relevant or not relevant? But the interview may ask you such questions. And what if we ask you 9 questions like this, dadadar, dadadar, dadadar karke, to put you under stress? The 10th question is, what is your name? And the candidate is found shaking his head because he doesn't even know that. By now, he's forgotten even his name. कि वो कहता है मेरा बाप मेरे को छोड़ मेरे को जाने दे. समझ गए? तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस इंटरव्यू हो गया बेसिकली. जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हम्म. And current affairs is all about analysis. You need to analyze. हम्म. I think the newspapers is your best bet. Keep जी. reading it on a day-to-day basis, and I think that's the only way out. जी. And you are जी. doing a wonderful job, Sandeep. Let me tell you, by putting people, you see, updating them regularly, every week, perhaps, you see, on your platforms. When you talk to them, I'm sure they're catching up with the past, which they have missed out on, and that's what brings them update. And after that, they must follow it up with regular reading of newspapers, magazines, etc. I think that should do the trick. जी. 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 थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स. अब ये बताइए कि अगर मैं अभी 9th 10th 11th 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूं, या मैं ऐसे किसी बच्चे का पेरेंट हूं, और मुझे उसको लॉन्ग टर्म प्रिपरेशंस करवानी है, तो रिटन एग्जाम्स तो ठीक है. इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी बिल्डिंग, in terms of handling oneself, presenting oneself, all the things that you spoke of today, what should be my long term preparation like? 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year? एक भारत में पहले 5 year प्लान्स हुआ करते थे. 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद उन पर झाड़ू फिर गई और नीति जी आयोग आ जी गया. जी बिल्कुल तो बिल्कुल. एक पंचवर्षीय योजना स्टूडेंट्स के लिए अब आप बताइए सर कि बेटा ये 5 year प्लान तू बना ले. तो वी आर नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू द 5 year प्लान. Sandeep, this is a very interesting question you put across, and a lot of people, a lot of parents come because of this, जी. and they ask me this question: कि इसका क्या करना है, कैसे करना है? How do we prepare? My son is brilliant when it comes to academics,
जी, etc. तो वो जी, सारी। जी, Sandeep, I have only one thing to say to these parents is, and that is, they must encourage their wards to act as per their age. Now, जी। this is a very important statement: acting as per your age. I नई बात see है, अच्छी बात people, बताई yeah, आपने। I see हुँ, people coming, you see, at a level of 20, 21 years of age. हुँ, When they come हुँ, and tell हुँ। me, sir, my extracurriculars and hobbies is playing cricket with a rubber ball, etc. You see, or, watching movies or something. भाई Nothing लेदर बॉल ही wrong बोल with देता that. है यार। तो मैं उसे कहता हूँ, यार, लड़कियां को मैं कहता हूँ, देन आप तो फिर आप मेरे पास आके बोलोगी कि वी प्ले विद बाबी डॉल्स यस। एटसेट्रा। मैंने एक उम्र होती है यार ये सब करने की भी। सचिन तेंदुलकर 17 साल की उम्र में क्रिकेट के मैदान में आ गया था नेशनल सीन पे, और तुम अभी तक लगे हुए हो दाढ़ी मूछ आने के बाद भी रबड़ बॉल से क्रिकेट खेलने, और यू थिंक यू आर डूइंग हेल ऑफ अ जॉब। Similarly, I think the right type of reading, the right type of games, the right type of hobbies, the right type of, other interests which the person must develop is to do with his age. Once you are out of your teenage, you must draw up a long term perspective कि कॉलेज में घुसने के बाद अगले 3 साल मैंने क्या करना है। And if you miss out on those 3 years, then don't come to us at the fag end of your college when you are preparing for your CAT or other competitive exams, and then say, "Sir, मैं इस column में क्या लिखूं?" Right? It will be too late. You've not read any books. You've not done any activities which are there befitting your age, and now you are found wanting. So this is एक what सवाल है सर यहाँ पे। जी पिछले 5-10 सालों में बहुत कुछ बदल गया और अब जो जी जनरेशन आ गई है, वो पूरी तरह से डिजिटली नेटिव जनरेशन है। उनकी बिल्कुल लाइफ इसी बिल्कुल। पे बीत रही है। हाँ जी। तो ऐसे में हॉबीज, इंटरेस्ट, रीडिंग हैबिट्स, क्या वो काफी हद तक अब रीडिफाइन नहीं हो गया है? जनरेशनली एक पूरा चेंज नहीं आ गया है? बिल्कुल आ गया है, लेकिन संदीप जी एक चीज मैं आपको बताऊं, कॉर्पोरेट लाइफ में अगर आप लोगों से पूछें तो यू विल सी दैट अपार्ट फ्रॉम योर एबिलिटी टू राइट द कोड, योर एबिलिटी टू बी टेक savvy, etc., still the communication as well as your writing prowess still carries a lot of weight. I've seen some managers very senior who can't write 2 lines straight and who can't ओह, present anything. So, do ओके। you think that these skills can be replaced? And the answer is हम्म, no, हम्म, right? So, we हम्म, need to consider these things seriously. That is हम्म। it only the digital transformation which is going to carry us through, or certain basic skill sets still have to be जी, nurtured? जी, 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 जी। तो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन में आप यही कह रहे हैं कि बी योर एज, जी कीप इवॉल्विंग विद टाइम एंड हैव अ 5 ईयर प्लान इन माइंड और उसको फिर आप चेस करते चलें। हाँ जी हाँ जी जी। अब एक बहुत ही बेसिक सवाल। हाँ जी सपोज आई प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम एक्स एंड आई स्पेंड 3, 4, 5 years and then I realized that I was actually meant for career Y and exam Y. What to do? Wow, wonderful. I've had several students who come to me after their civil services exams 4 साल, और उसके बाद आके कहते हैं, सर आई एम डिजेक्टेड, मेरा नहीं हुआ, या चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके आते हैं, 1% सक्सेस रेट है, और उसके इतने अटेम्प्ट्स देने के बाद नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करूं? दिस जी। इज अ क्वेश्चन which normally they come with, and they then look for alternative career choices and other avenues. And my major worry is how to get this child out from the dejection part of it or the depression part of it. And then when I tell them, I said, look, ये क्लास में जितने लोग बैठे हैं, इनसे तुमने अगर 4 साल सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी है और तुमने इतने वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स का अध्ययन किया है, तो डोंट यू थिंक दैट यू आर बेटर ऑफ देन देम, right? So that is the time when they start realizing that the biggest weaknesses now can be turned into the biggest strength, etc. And they played up on it. I made them play up on it, and I found that they've really done extremely well, because life is not about watertight compartments. It is not about I am a civil engineer and therefore I need to only get into civil engineering, right? I need to understand as to what are the other peripheral skill sets that I've developed, what are the other interests that I've cultivated, what are the other subjects which I've learned over the years, etc., and can I take them along with me? I think you are mighty powerful when you carry everything along. हम्म, We हम्म, today have understood that it is not simply a one subject game.
It Hmm, is, hmm, I hmm, think, hmm, hmm. everything into my decision making Hmm, which hmm, comes in. hmm, hmm, hmm. Sir, how important are extracurriculars as far as interviews are concerned? या मैंने वो स्टेटमेंट अगर जो बोली थी कि अ मैन इज नोन, सॉरी, एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप. जी, So if you really understand this, so extra जी, curriculum, apart from my curriculum, what do I do after I get back home? It जी, is the straight indicator of the compass of my mind as to, you see, which way it is pointing to. जी. Extracurric is something like that. Now, however, it's a little different from hobbies and other interests in the Okay. sense that extracurrics is something which I make, like, for example, if I take tuitions after coming back from office, Hmm, right, to hmm, make hmm, extra money or something, that's hmm, a could be an extracurricular activity. hmm, 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 Hobby is a little different because that involves passion. I'm passionate hmm, about it. And whenever time permits, I would love to do it. Maybe hmm, reading as a hobby, etc. hmm, So this hmm. is where we need to understand that both are equally important and we need to give time to both of them. Okay, okay. Very interesting. Now, an honest question. J. Do you think that the schools and colleges and universities of today are really grooming their students for the careers of tomorrow? और सर सच बोलिएगा. You see, संदीप, मैं पहले ही बदनाम हूं इस बात के. और ये इंटरव्यू के बाद और हो जाएंगे थोड़े से. You see, जी सर बोलिए. मेरे से मेरे कुलीग्स भी ये सवाल करते हैं कि यार गुरमीत तू क्या पढ़ाता है इनको, राइट? हम्म. And I tell them, I say, what their schools did not teach and the colleges did not know. हाँ हाँ हाँ. So, with this statement, I think I cannot elaborate anything further on this because there are a whole lot of things that I realize which have not been taught to these people, these children, you see, at the right level or the right time at the right stage. हम्म. जो चीज जब मैंने कॉमिक्स पढ़नी शुरू करी थी बचपन में, राइट, और आज अगर उस स्टूडेंट ने नहीं पढ़ी तो उसका लॉजिकल रीजनिंग वगैरह लैंग्वेज कुछ भी डेवलप नहीं होता. जी जब जी वो जी कहता जी है जी. कैरेक्टर आउच कहता है तो आउच का मतलब मेरे को समझ में आता है आउच क्या होता है. You see, things like that. हम्म. So you see, there were stages of learning, the stages of doing things, the stages when we had to pick up things, and I think the school had a major role to play in that. एब्सोल्युटली. Same goes for college. You see, हम्म. people normally take internships very lightly. They say, इसका यस क्या फायदा यस है? कुछ तो सीखने को नहीं मिलता. I यस tell them this यस. is that small window which you get to learn or see things from the corporate life point of view. And हम्म. my experience has been that the people when they first get the first job, the first casualty is because of the thing that people simply think it's an extension of college life, which it is not. Right? You are now a professional who's getting paid. Earlier, you were paying for the services which the college was delivering. Right? And so, if you think that the same things will carry on, coming late, right? Fudging things, right? I would not like to name anything further, but I think we are all aware of it. इनफ सेड एब्सोल्युटली. आपके साथ 1 घंटा कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला और ऐसा लग रहा है कि अभी तो 4-5 घंटे और हमें बात करनी चाहिए. तो हम आगे तो आपको कई बार अब इनवाइट करेंगे सर. बच्चों के साथ बहुत सारी चीजों पे डिबेट भी करेंगे. बहुत अच्छे-अच्छे शोज प्लान करेंगे. लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि आप अगले 2 या 3 मिनट आपने भारतीय सेना को अपनी जिंदगी के 23 साल दिए. अलग-अलग सर्विसेज में, अलग-अलग विंग्स में. आप 25 सालों से हजारों बच्चों को करियर गाइडेंस दे रहे हैं. कईयों की आपने लाइफ इतनी अच्छी चमका दी कि पूछिए मत. व्हाट इज योर मैसेज फॉर द यूथ ऑफ इंडिया who are looking at a golden future for themselves and are in general struggling with so many systemic constraints? आपका संदेश क्या होगा यूथ के लिए? क्या कहना चाहेंगे आप? Uh, Yeah, very interesting, Sandeep. Actually, we find people very confused, you see, initially because there's a lot of parental pressure at times for a person, especially coming out of a school and college. And a lot of peer group pressure also starts building up on the person.
So my first thing is to tell the person that he must believe in himself and must introspect as to what is his career objectives and what are the key strength areas on which he can play up. People normally do not understand their strengths. I think this is the most misunderstood uh, thing. Unfortunately, we didn't get much time to today talk on it. Some other day, I think we'll be able to spare on this issue. जी जी The second is that, like what we had already discussed, is they must act their age and pick up hobbies and extracurriculars as per their what behoves their age. So that's extremely important. The third is that they must have the ability to bounce back. Yep, even ब्यूटीफुल in an interview, this is what is checked. We do not check that. We do not want you to be a walking, talking encyclopedia. We watch the ability to bounce back. और बहुत ये बढ़िया जो है बहुत मेरा बढ़िया ख्याल है लाइफ सिखाती है. बहुत If you बढ़िया recall, even SP Jain में form filling में they ask you a question that what are the adversities through which you have passed through. You जी see, it's a very important question. People normally go through a very smooth sailing life with no ups and downs. Now, obviously, then that means there are no lessons learned. You must take risk. You must go out and try out things for yourself. There'll always be a first time, but so what? But you must learn on your own and not expect everything to be spoon fed to you. The fourth thing that I would like to say is that they must, have a positive, build a positive environment around themselves. जी And जी that they have to do it. I don't know how they do it, but it's हम्म a really tough task in today's environment, right? And today, when our youth is falling, prey to drugs, bad habits, addictions, etc., I think we need to work on some other areas in order to keep them busy, active, etc. Wean them away from gadgets, gizmos, etc., because this is not the only life. So, this is what I would like to convey to the youth, that I think they have a very bright future. They're much better than what our generation used to be. But, however, they need to get some things straight. And once they are able to do it, I'm sure they'll get going. And India has a very bright future. And today, the youth is our future. And I think we need to work on them and we need to invest our time on them. I'm very happy, Sandeep, that you introduced me to this education sector. I like to सर convey to our students one thing. After 23 years of wonderful army career, when I became a low medical category and wanted to shift my career in the middle life crisis, I came across Sandeep at Indore, and one thing which I saw in him was a true passion and some wonderful थैंक standard यू operating procedures that he had built up on. In the army, I was used to working on standard operating procedures. जी And here I जी saw a man, young man, who was working on standard operating procedure. I said, hats off to him. I said, सर आई एम wonderful. स्टिल वेरी यंग आई एम स्टिल 28 ओनली Yes, 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 yes. You're still young, right? Yeah, definitely. खुद को तो So बोल ही सकते moving हैं सर time, खुद को तो बोलना ही चाहिए हाँ, और लेकिन मैं संदीप ये कहूंगा सर आपके जी, साथ हमने इतने डेकेड्स तक काम किया बहुत सीखा है आपसे हमने और जी। आज 1 घंटे बच्चों ने आपसे कितना कुछ सीखा और जाना सरल भाषा में सेठी जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एक संदीप घंटा एक कहाँ लास्ट बीत गया स्टेटमेंट पता ही नहीं कहना चला चाहूंगा. एक लास्ट स्टेटमेंट कहना चाहूंगा. वो सर ये था कि सवन संदीप आसमी की सेठी जी आपने 23 इयर्स आर्मी में दिए, बट डू यू अंडरस्टैंड दैट इन द एजुकेशन सेक्टर you have no experience. जी That is what is learnability. I learned that learnability of the education sector when I came in and moved into Sandeep. Thank you so much, Sandeep, for all that what you've done and what थैंक यू we've सर learned थैंक so यू far. तो हम आपसे फिर बहुत जल्दी भेंट करेंगे सर हमारे सभी व्यूअर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे लिए समय निकाला थैंक यू सो मच एंड वी आर गोइंग टू मीट वंस अगेन वेरी सून थैंक यू Thank सो you. मच Thanks a lot. प्यारे साथियों आप थे लेफ्टिनेंट कर्नल गुरमीत सेठी मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सभी व्यूअर्स को स्टूडेंट्स को और इंटरव्यू एस्पायरेंट्स को आज बहुत प्यारी प्यारी बातें सीखने को मिली हम इन्हें फिर से आपके सामने लेकर आएंगे अब आप एक काम करें कमेंट थ्रेड में बताएं कि आपके सवाल क्या हैं तो हमारे जो अगले गेस्ट होंगे और जब हम सेठी जी को और हमारे पुराने गेस्ट को भी कभी एक डिबेट फॉर्मेट में बुलाएंगे तो आपके सारे सवाल भी हम ले लेंगे तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही करियर चर्चा को आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे हमारे साथ आप लंबे समय तक जुड़े रहें प्यारे साथियों याद रखिएगा ये सीरीज हमने विशेष तौर पर आप ही के लिए लॉन्च की है जितना आप इसे सपोर्ट करेंगे उतना इसे आगे चलाने में हमें मजा आएगा आनंद आएगा तो मेरी तरफ से इतना ही नमस्कार जय हिंद